See, I have told about the Newton's corpuscular theory. By Newton's corpuscular theory, they have said that light have a particle nature, especially tiny particles. They have said about the corpuscular name they have given that those tiny particles. In Huygens theory, Huygens have told about the wave theory. Initially, they have said that light is in longitudinal wave. They have also assumed about hypothetical medium that is called luminiferous ether. These theories they have said wave theory of light. Newton has given particle nature and Huygens has given wave nature. तो हम हाइजेंस की थ्योरी को थोड़ा सा हम और भी आगे बढ़ा रहे हैं. तो व्हाट हाइजेन हैज सेड इन वेव थ्योरी कि टू टाइप ऑफ सोर्स, वन इज प्राइमरी सोर्स एंड सेकंड इज सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स मीन द सोर्स विच इमिट्स लाइट बाय इटसेल्फ, जो खुद ही अपने लाइट्स को, उसको आप ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी जैसे कहते हैं. देयर में बी सम रीजन्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं. ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट के कारण हो सकता है. हाई टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल जैसे हाई टेम्परेचर का एक मैं एग्जांपल लूँ तो सन हाई टेम्परेचर के कारण दे आर इमिटिंग लाइट. तो प्राइमरी सोर्स का एक रीज़न क्या हो सकता है, हाई टेम्परेचर. सन का हो गया, स्टार्स हो गए, तो दे आर ड्यू टू हाई टेम्परेचर दे आर इमिटिंग लाइट्स. एक हम और भी कर सकते हैं ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. फॉर एग्जाम्पल आप बल्ब देखते हैं, ट्यूब्स देखते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, दे आर एक्ट एज ए प्राइमरी सोर्स. दे आर इमिटिंग लाइट ड्यू टू व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट ऑफ ट्यूब. तो सेकेंड इफेक्ट यू कैन से, यू कैन से फॉर द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग. ठीक है. थर्ड आप कह सकते हो कि केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शंस. तो केमिकल रिएक्शंस के कारण भी क्या होता है, लाइट इमिट्स होती हैं, प्राइमरी सोर्स का काम करते हैं. उसके कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं. किसका एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैंडल आप देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में जो लाइट इमिट्स है. ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे जहाँ पर आपको कौन सा केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शन. अच्छा, व्हेन वी आर टॉक अबाउट सेकेंडरी सोर्स, जब हम सेकेंडरी सोर्स की बात करते हैं तो जब सेकेंडरी सोर्स देखोगे तो प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट इमिट्स लाइट बाय ओन सेल्फ, जो अपने ओन से लाइट इमिट नहीं करता, बल्कि क्या होता है, दे आर रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स. कभी रिफ्लेक्ट करता है, कभी ट्रांसमिट कर सकता है, कभी वो क्या कर सकता है, स्कैटर कर सकता है. तो दैट इज कॉल्ड, आपका क्या कहलाता है बेटा, सेकेंडरी सोर्स. उसे हम ऐसे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी कहते हैं. तो देयर आर टू टाइप ऑफ, one is what, primary source of light. Primary sources are sources that emit lights their own due to, मैंने बताया था फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है बेटा, हाई टेम्परेचर. एग्जांपल मैंने दिया आपको स्टार सन का. सेकंड क्या हो सकता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट. फॉर एग्जांपल मैंने बताया बल्ब, ट्यूब, टीवी वगैरह जो है. थर्ड आप कह सकते हैं केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शंस, जैसे कैंडल, रिएक्टर वगैरह में आपका क्या होता है, दे इमिट्स लाइट ड्यू टू केमिकल एंड न्यूक्लियर रिएक्शन. फिर मैंने कहा बेटा सेकेंड सोर्सेज ऑफ लाइट. व्हेन सेकेंड सोर्सेज ऑफ लाइट नॉन ल्यूमिनस जिसे हम कहते हैं, तो दो सोर्सेज विच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑफ देयर ओन. द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट बाय देयर ओन but receive lights from primary sources and either reflect or scatter or transmit. So that is called secondary source. Moon देख सकते हैं, human, plants, ठीक है, even you can say earth surface, rooms, ये जो भी हैं ये these are called secondary source of light. अब यहाँ थोड़ा सा न्यूटन हाइजेन वेव थ्योरी समझने के लिए कुछ टर्म्स हमको जानने पड़ेंगे, जिनके आधार पे बाय द हेल्प ऑफ दैट वी विल एक्सप्लेन. हम किसको एक्सप्लेन करेंगे, आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अदर थिंग्स वी विल एक्सप्लेन. तो सबसे फर्स्ट टर्म आपको जानना चाहिए वेव फ्रंट. एक्चुअली वी नो अबाउट द वेव्स. साउंड में हमने पढ़ा था साउंड वेव्स.
थोड़ा सा हम लोगों ने क्या देखा था, रिपलिंग ऑफ वाटर वेव्स, हमने वाटर वेव्स के बारे में पढ़ा था। स्टार्टिंग वही कहते हैं कि व्हाट इज वेव, वेव मीन प्रोपेगेशन ऑफ या प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड वेव। एक सबसे अच्छा सिंपल एग्जांपल, वी आर गिविंग द रिपलिंग ऑफ वाटर सरफेस। अगर सपोज करो कि इफ यू आर डिस्टर्बिंग समवेयर एट द सरफेस ऑफ वाटर, तो यू विल सी a wave producing on the surface of water. तो there you can see, वहां पर आप देख सकते हैं, अगर वन डायमेंशनल देखें तो if you take one center, तो they are forming a circle, ठीक है। if you'll see that a wave which are in the same phase, अगर हम सेम फेस पर बात करें तो you can see there is some circles, a fixed radius, अगर एक फिक्स रेडियस का सर्कल्स फॉर्म करें तो दे आर इन सेम फेस। वैसे अगर हम ये टू डायमेंशनल होता है, अगर इफ यू टॉकिंग अबाउट द थ्री डायमेंशनल, अगर हमने वी हैव टेकन ए लाइट सोर्स, पॉइंट सोर्स है, तो दे विल इमिट लाइट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। इफ विल सी द पॉइंट्स वेयर द वेव्स आर इन सेम फेस, those points, collection of points या set of points which are in the same phase are called wavefront। एक न्यू टर्म्स ऑफ फिजिकल टर्म्स पढ़ेंगे, दैट इज wavefront, the locus of all points having the same phase at a given instant of time is called wavefront। wavefront mean a collection of points which are in the same phase, that is called wavefront। एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर हम वी हैव टेकन ए पॉइंट सोर्स, अगर हमने एक पॉइंट सोर्स लिया तो एक पर्टिकुलर रेडियस का इफ यू ड्रॉ स्फीयर, ठीक है, तो द स्फीयर, all the points of sphere will be in same phase because they will reach at the same instant from the source। सभी सेम इंस्टेंट पर वहां पर स्फीयर्स के सरफेस पर पहुंचेंगे, इसलिए जो स्फीयर्स का जो पॉइंट होगा वो सभी पॉइंट्स क्या होंगे, सेम फेस में। तो दिस स्फीयर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बेटा, वेव फ्रंट। एक्चुअल में हम देखेंगे देयर मे बी थ्री टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। एक थोड़ा सा हम एक और भी वर्ड्स यहाँ पर देखेंगे, स्फेरिकल वेव। एक्चुअली व्हेन लाइट वेव प्रोड्यूसेस बाय लाइट सोर्स और पॉइंट सोर्स, इट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सोर्स and propagate in three dimensional अगर हम देखें तो such a wave is called spherical wave। अगर कोई point source है तो point source they will emit light in all possible direction। if we draw a sphere of particular radius, तो that sphere is known as, क्या कहलाता है बेटा, spherical wave। तो spherical wave का यहाँ पर बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट रहेगा। एक चीज और भी आप जानेंगे, रे ऑफ लाइट और वेव नॉर्मल। what is ray of light, कहता है the arrows which is perpendicular to wavefront are spherical wave and so the direction of propagation of wave are called rays of light। if a arrow draw on the perpendicular on the surface of wavefront, अगर वेव फ्रंट के सरफेस पर हम क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो दैट परपेंडिकुलर एरो इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा, रे ऑफ लाइट, या उसी को हम उस पॉइंट पर किसका नाम लेते हैं बेटा, वेव नॉर्मल। तो वेव नॉर्मल और रे ऑफ लाइट, द एरोज विच इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट एंड सो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड रेज ऑफ लाइट और वेव नॉर्मल। So here, for the construction of wavefront, Huygens has given a principle. What is the principle, Huygens principle? So see here, Huygens has given a principle that a wavefront, each point of wavefronts behave like a new secondary source। wavefront का जो each points होता है वो किसका behave करता है बेटा, न्यू सोर्स का, सेकेंडरी सोर्स का, which emits wavelets in all possible direction, जो क्या करता है, वेवलेट्स इमिट करता है, विच ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। वेवलेट्स जो है वो क्या होगा बेटा, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा इन दैट मीडियम। एक चीज उन्होंने और कही कि अगर हम सेकेंडरी वेव फ्रंट फॉर्म करना चाहें, तो सेकेंडरी वेव फ्रंट फॉर्म करने के लिए उन्होंने एक चीज बताई कि इफ वी ड्रॉ ए इनवेलप
इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आप इनवेलप ड्रॉ करते हैं, व्हाट इज इनवेलप? इनवेलप मीन ए टेंजेंशियल सरफेस टू द वेवलेट्स के सरफेसेस पर एक टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करें तो दैट इज कॉल्ड इनवेलप। तो उन्होंने ये कहा कि द इनवेलप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन जो होगा दैट विल बी द न्यू वेव फ्रंट। वो जो है किसका बिहेव करेगा बेटा? न्यू वेव फ्रंट का। अच्छा, बैकवर्ड डायरेक्शन का जो होता है इनवेलप जो होता है दैट इज इनइफेक्टिव। उन्होंने हाइजन ने कहा कि जो बैकवर्ड डायरेक्शन का वेव फ्रंट होता है दैट इज इनइफेक्टिव। तो व्हाट इज द हाइजन प्रिंसिपल? बहुत इंपॉर्टेंट है हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन प्रिंसिपल क्या कहता है? ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, emitting secondary light waves called wavelets, which travels in all direction with speed of light in that medium. First point. Second point उन्होंने क्या कहा कि the new wavefront can be obtained by taking the envelope of these secondary wavelets traveling in the forward direction. जो forward direction में envelope होगा वही effective मानते हैं। The wavelets traveling in the backward direction are ineffective, वो effective नहीं होते। और इस तरीके से उन्होंने क्या कहा कि this new wave front acts as a, अब जो new wave front बना प्राइमरी wave front का, तो वो फिर से क्या होगा? That will behave like a new source and which will gives क्या? upcoming wave fronts। जो upcoming wave fronts को फिर से वो क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि हाइजन ने कैसे कंस्ट्रक्शन किया प्लेन वेव फ्रंट का विद द हेल्प ऑफ हाइजन प्रिंसिपल। एक एग्जांपल देखेंगे। सपोज करो दिस देयर इज एनी प्लेन सोर्स, यहां पर कोई प्लेन सोर्स है। एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0 वी हैव टेकन ए प्लेन वेव फ्रंट। हमने एक प्लेन वेव फ्रंट लिया, तो द पॉइंट्स, ईच पॉइंट्स ऑफ दिस प्लेन वेव फ्रंट इट विल बिहेव्स लाइक ए न्यू सोर्स। Each point of wavefront behaves like a, यही उन्होंने कहा था, each point of a wavefront acts as a secondary source of light। तो each point, इसके जितने भी points हैं they will behave like a secondary source and emitting secondary lights in the form of wavelets। तो wavelets का फॉर्म कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल होता है। तो if you draw a sphere, अगर मैं यहां पर एक स्फीयर ड्रॉ करूं, suppose I have drawn a sphere, this is the sphere। same way for this we have drawn a sphere, यहां पर भी हमने क्या किया? sphere ड्रॉ किया। if you want to find new wavefront at t is equal to t, हमें t is equal to t टाइम पर हमें क्या करना है बेटा? न्यू wavefront फाइंड आउट करना है। तो you have to draw a sphere of radius, कितना रेडियस होगा? v is the velocity of light in that medium, so radius we have to take r is equal to vt। so you have to draw a sphere of radius vt। तो vt रेडियस के हमने क्या किए बेटा? स्फीयर्स ड्रॉ किए। तो these are the spheres of radius vt। तो see here, if we draw envelope, so this will be the envelope। envelope mean a tangent to the tangential surface which is touching these wavelets। so this will be the wavefront in forward direction। if you'll see there is a wavefront in backward direction, so backward direction what they have said, the wavelets traveling in backward direction are ineffective। तो these are ineffective, ये आपके ineffective हैं, तो इनको आप क्या कर सकते हैं? गायब कर सकते हैं। ठीक है, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जो है वो क्या होता है बेटा? इफेक्टिव होता है। तो at t is equal to t you will see this will be the new plane wave front। ये आपका नया प्लेन वेव फ्रंट होगा। ये प्राइमरी, अभी आपका सेकेंडरी या न्यू वेव फ्रंट। अब again we will say this new wave front, each point of this new wave front will behaves like a new source। if we draw wavelets, फिर next अगर हमें चाहिए तो फिर से next t टाइम पे t is equal to t, तो t is equal to, if you want 2t, t is equal to 2t point। at that time if you want to draw new wave front,
What we have to do? Again Vt radius. You will draw semi-sphere because these are effective in only forward direction. If you draw wavelets, these are the wavelets. We have taken semi-spherical because they are effective in forward direction only. If we draw envelope upon this, this will be the न्यू वेव फ्रंट. अभी आपका नया वेव फ्रंट हो गया. ठीक है, तो दिस न्यू वेव फ्रंट विल बी एट t इज इक्वल टू कितने पर होगा बेटा 2t. लाइक दैट इफ यू विल ड्रॉ, तो दिस विल बी द वेव फ्रंट, the next wave front in forward direction. तो these are the plane wave front. ये आपके plane wave fronts फॉर्म हुए. अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, हाइजेन कंस्ट्रक्शन फॉर spherical wave front. Suppose there is a point source. At any instant, this is the spherical wave front. At t is equal to 0. So each points behave like a new source. By Huygens principle, each point of this wavefront behave like a new source. They emit light in the form of wavelets, spherical wavelets. If you draw spherical wavelets, if you want to find t is equal to t, you have to draw the sphere of radius. कितने का draw करना पड़ेगा? If v is the velocity of light in that medium, so you have to take the radius vt radius. You have drawn spheres in forward direction. You can take it in backward direction also. After that we will finish it, because in backward direction it is not effective. I have drawn the spherical wavelets. These are the spherical wavelets. These are the spherical wavelets we have drawn. See here, if we draw envelope, this is the envelope, touching surface. In backward direction, if you see like that, but this backward direction wavelets are not effective. You can rub it. This is not effective. Only effective is this. So this will be the new spherical wavefront at t is equal to capital T time. At capital T time, this will be the new spherical wavefront. Again, this new spherical wavefront behaves like a new secondary source. So each point of this, it will behave like a new source. They will emit lights in the form of wavelets. फिर से आप wavelets you can draw. If you will draw semi-spherical wavelets, if we draw envelope upon that, so this envelope will behave like a new wavefront. इसका new wavefront यानी आप कह सकते हैं t is equal to 2t पर this will be the new wavefront, spherical wavefront. ऐसे आप फॉरवर्ड करोगे तो नेक्स्ट फिर से आपका न्यू वेव फ्रंट्स, ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनते जाएंगे. तो दीज आर द स्फेरिकल वेव फ्रंट. ये आपका कौन सा वेव फ्रंट है बेटा? स्फेरिकल. अभी जो हमने आपको बनाया था, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट. ऐसे अगर हम चाहें तो वी कैन फॉर्म सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट भी हम क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं. Huygens construction for cylindrical wavefront. Suppose tube type like structures we have taken. Okay. At any instant, this is the source. This is the source, like tube. At any instant, this is the spherical wavefront. This is a spherical wavefront. Each point of this spherical wavefronts behaves like a new source. So they will emit wavelets at t is equal to 0. They will emit wavelets.
The semi-spherical wavelets in forward direction we have drawn only. Same way forward direction we have drawn spherical wavelets. If we trace the envelope, so this will the envelope. This will be the envelope. This will be the envelope. If we say the new sphere, new cylinder it will form. So this will be the new cylinder. This new cylinder is new cylindrical wavefront. Again, if we say these points of cylindrical waves behave like a new source, so they will emit wavelets in forward direction. Same way they will emit wavelets if we draw the surface envelope. They will behave like a new spherical, new cylindrical wavefront will form. So this is the Huygens construction of cylindrical wavefronts. So I have shown you three type of wavefront. One is plane. This is plane wavefront. One I have taken as spherical wavefront. For plane source, they will form plane wavefronts. Primary, secondary, then it behaves like a primary, secondary, forward direction. If source is here, the forward direction. Source is here, so that in forward direction. These are the spherical wavefront. So I have said you, what will be the direction of ray of light? So normal of this in forward direction. If we trace normal of this in forward direction, this will be the wave normal or direction of ray of light. Here you will see that these are the wavefronts. If we draw a normal in forward direction, so this will show the direction of ray. Direction of ray for this, direction of ray for a spherical wavefront. Same way, direction of this normal to the in this direction. This will be the direction of ray. So direction of ray, you can see here the direction of wave normal or direction of ray of light perpendicular to the surface of wavefront. तो प्लेन के लिए भी मैंने बताया, फिर मैंने आपको बताया किसके लिए, स्फेरिकल के लिए, यहाँ पर किसके लिए बताया, सिलेंड्रिकल के लिए.